Yes, all the students, welcome. And the very first question is there on the screen. So choose the correct antonym of the word flagrant from the options given below. अब कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हमको वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी शुड लीव द क्वेश्चन. What is more important is try to understand what is the tone of the words, and even if you know what is the tone of the words, among the four options we can find out the correct answer. अब देखो flagrant, इसका टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्टूडेंट्स, इसका टोन नेगेटिव होता है. फ्लैग्रेंट का मतलब होता है समथिंग बैड, समथिंग ऑफेंसिव, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोटिसेबल. कोई बुरी चीज होती है ना, वो हमेशा नोटिसेबल होती है, अंडरस्टैंड. तो बस इसी को अपन कहते हैं फ्लैग्रेंट. इवन ड्रेसिंग कैन बी फ्लैग्रेंट, इवन someone's remarks can be flagrant, so that is the meaning of being flagrant. Shameless होना, blatant होना, obtrusive होना, so all these are synonyms of flagrant. But what are we supposed to find out? Antonym. And now students, if I talk about antonym, here I think the best answer is third option. Because unobtrusive का मतलब होता है something which is acceptable, something which is normal. इसे students हम लोग कहते हैं unobtrusive. Obtrusive becomes a synonym of flagrant. So yes, unobtrusive becomes the antonym of this word. Okay. And blatant भी इसका synonym है. And notorious का मतलब पता है स्टूडेंट, what is notorious? Okay, who is known as notorious? हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बड़े नोटोरियस होते हैं. Infamous, not for a good reason, but for a bad reason. So these people are not famous basically, these people are infamous. Okay, notorious. Done. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. जस्ट 1 सेकेंड. यस, चलिए, before we take the second question, IPMAT CUET crash course 2026 and the year-long courses for 2027, and जो बच्चे 10th पास आउट करके निकलने वाले हैं उन सब के लिए 2028. So do understand, if you want to become the part of these courses, visit iconcareers.com. एक बार स्टूडेंट्स आप www.iconcareers पर जाओगे तो वहां पर you people can watch some demo videos also and you can explore the content of the course. Fantastic online and offline courses are available, बिल्कुल भी मिस मत करना. और ये जो पूरी सीरीज है वो क्या की, इसे तो स्टूडेंट्स मिस करना ही मत. What is the meaning of juxtapose? Most similar in meaning to the word juxtapose. Yes, what does that mean? तो juxtapose का मतलब होता है to arrange or to keep something side by side. तो juxtapose का मतलब होता है side by side, adjacent. So that becomes the right answer. Even this question was there in CUET recently. और ये जितने भी vocab के questions हैं, ऐसे questions CUET में तो बहुत आते हैं. IPMAT में कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, बट फिर भी IPMAT इंदौर में vocab का अपना इंपॉर्टेंस है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट IPMAT रोहतक, जिपमैट, इन सब में स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं. नाउ सी, coming on the next one, we are supposed to find out the word which is opposite to pragmatic. So what is the meaning of pragmatic? Yes, pragmatic का मतलब होता है स्टूडेंट something which is practically possible, something which is suitable, appropriate, something which is feasible, something which is compatible, something which is realistic. Okay, that is the meaning of pragmatic. तो pragmatic का मतलब है practically जो possible है, understand, ऐसा कुछ सोचना. It seems to be a pragmatic idea. इसका मतलब है it seems to be an acceptable, normal, practically possible idea. अब स्टूडेंट्स मुझे इसका अपोजिट बताना है, तो प्रैक्टिकल आंसर हो नहीं सकता. सेंसिबल इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. किसी भी चीज में प्रोफिशिएंट होना. एनीवे स्टूडेंट्स, जब आप किसी चीज में बहुत अच्छे होते हो तो उसे अपन कहते हैं प्रोफिशिएंट होना. प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश इन दिस वे. एंड यूटोपियन का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल. ओके, यूटोपियन का मतलब है आइडियलिस्टिक होना. We think about a society which is in perfect order. So when a person believes in perfection, when we believe that the society has to be an ideal place, okay, you think about a society where people live in harmony. There is zero crime, there is zero inequality. Everyone lives in peace and harmony. But such a society is now practically not possible. So it is just an imaginary state. It means being idealistic. So students do understand, यूटोपियन का मतलब है to think about a society which is in perfect order. और क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता है, इसलिए ये केवल एक
आदर्श है, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है. तो आइडियलिस्टिक होना, अनरियलिस्टिक होना. Okay, that is the meaning of utopia. Okay, so here students, the best answer is fourth option. Now coming on question number 4, the opposite of the word insipid. So what is the meaning of insipid? Insipid का मतलब होता है dull होना, boring होना, monotonous होना, something which is not new, something which is run of the mill, एक जैसा, cliche, stereotyped, vapid, bland, uninteresting. All these are synonyms of insipid. So anyway students, मुझे इसका opposite बताना है. The correct answer is savory. Savory का मतलब है something which is pleasant to taste, something which is acceptable. थोड़ा spicy, थोड़ा salty. That is the meaning of savory. Okay. So second option becomes the correct answer. And here we take the last question. We are supposed to find out the synonym of alleviate. Now what is the meaning of alleviate? Yes, anyone? Alleviate करना मतलब किसी की प्रॉब्लम्स को कम करना, किसी की प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना, उसे कंफर्ट देना, सॉफ्टन करना, उसे यू मान के चलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना. अंडरस्टैंड? टू मॉलिफाई, टू सॉफ्टन. ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ alleviate. तो हियर स्टूडेंट्स, बेस्ट आंसर क्या होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. एसुएज का मतलब भी होता है किसी को पैसिफाई करना, किसी को अपीज करना, किसी को प्लीज करना, किसी को कंफर्ट करना. दैट इज द मीनिंग ऑफ assuage, and that is what the meaning of alleviate is. swell तो स्टूडेंट्स एक तरह से swelling. आपके swell का मतलब सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो जाना, स्पॉइल हो जाना. aggravate again the same thing. aggravate का मतलब भी होता है when the situation gets worsen. aggravate. And repel is something which we dislike. Anyway, the best answer is assuage. So these 5 questions were actually there in CUET. And these are the types of questions on which you people have to work upon. As a question, students, बहुत कम time में you people can score high. But what is important is you should know the meanings of these words. Otherwise, the situation becomes helpless. So students, vocab is the key to success as far as CUET and the various IPMATs are concerned. And if you want to prepare with us for IPMAT and CUET, don't forget to go on iconcareers.com, get in touch with us, and join our online and offline courses. All the best.